मेरा एक्सपोज वीडियो बनेगा, मजा आएगा मुझे. Yes, we basically want to expose you. Yes. Exactly. Exactly यही करना. परफेक्ट है. Yes. तो पहले बता दे तो मैं पीछे से दारू वारू की बोतल रख लिया था 3-4 वो ऐसे. अभी रख लो, कोई इशू नहीं है. और I can just take like a bottle of Jack Daniels and things like that. No issues. Everything As is. long as you are okay with it, हमें कोई problem हमें नहीं कोई है. इशू नहीं है. I am an open book. My entire audience knows it. Like मेरे को कोई टेंशन नहीं है उस बात की. Welcoming on the talk, the man behind Sketch Build Ride, Mr. Sunny Chauhan. Hello Sunny, I welcome you to the talk. And how about we start with you? कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो? And just tell us एकदम candid way में. आप Candid मैं way explain में? करूँगी, सब आप बताओगे. अच्छा. Okay. So motorcycles शुरू से like since my childhood have been like a passion, more of an obsession actually. And मैं करता कुछ खास नहीं हूँ. मैं अपना obsession, मैं अपना passion जो है share करता हूँ लोगों के साथ. कोई set pattern नहीं है उसका, कोई routine नहीं है उसका कि मेरे को vlog करना ही करना है आज या you know I have my own way of doing it, which is basically having no way of doing it, right? मेरा जब जो मन करता है मैं करता हूँ अपने हिसाब से. आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो सोलली रिलाई करते हैं इस चीज पे फॉर द ब्रेड एंड बटर, विच इज वन गुड थिंग फॉर मी एटलीस्ट, विच इज व्हाई आई कैन चूज द टाइप ऑफ कंटेंट आई वांट टू पुट बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिवली. So this is one thing that I do, which you know YouTube पे Sketch Build Ride. इसकी भी एक स्टोरी है. Sketch Build Ride इसलिए है because sketch comes from my design background. Yeah. Where basically I'm an automotive designer by my qualifications, right? Okay. It was a French college which I studied in India, in Pune. It's called DSK International Campus. Pune mein it was a college. Hype हो गया. Right. So I studied there. Then I was in China. I was in Shanghai for some time. I was working there. There I saw a lot of new cars, new motorcycles and everything. Then I came back because I realized job मेरी type की चीज नहीं है. Apparently I am too intimidating to do a job, and I said okay. So if that is the case, I'm happy. Our soldiers can intimidate the Chinese on the borders, and मैं वहाँ जाके करके आ गया. So it's the same thing, right? So that is one thing I realized. One for the country. One for the country, especially coming from a Fauji background. Like I mean, for me, it's like a big deal. So that is also something which I say ki a part of what I do also goes to the Indian Army and my background, because बचपन से I've been traveling. I cannot sit at one place. Like मेरे को हर 3 साल में से move करने का I have seen that. So I was born in Delhi, then Bangalore, Himachal, J&K, Manipur. So when people say कि हम एक ऑल इंडिया राइड करके आए, मैंने टेक्निकली बचपन सब तक ऑल इंडिया मतलब राइड ही किया एक तरीके से. हाँ, मैं सब जगह घूम चुका हूँ प्रॉपर्ली. एंड मैंने ऐसे घूम चुका है, स्टेड देयर फॉर 2 to 3 years. लाइक लोग बहुत रेयरली मिलेंगे जो आपको बोलेंगे मैं मणिपुर में 3 साल रह के आया, राइट? So I have friends there, I have people there, I know their culture, their food and everything, which is why when somebody asks me कि आप all India ride करोगे, तो मैं बोलता हूँ मैं असली all India ride करूँगा, because a lot of people do all India rides and they don't go to the northeast के जितने भी states हैं. So I do not consider any of those rides as all India rides. Coming back to the name, Sketch Build Ride. So sketch part comes from my design background. Build part comes from the fact that with a friend of mine, Nigel, we did some custom work in Pune. It was like a small workshop. मेरी खुद की बाइक पे like हमने खुद अपने हाथों से काम किया है, like all the carbon fiber and stuff that you see on the bike, we did it on our own. Like lacquer painting हुआ, ये हुआ, वो हुआ सब. And with Nigel's help we did that. Nigel's an expert when it comes to all of this. So be it carbon fiber manufacturing stuff. He was actually my trainer in college. College के बाहर जो है he was my friend. And even in college, like the word built stuck to me because Massimo Tamburini was a legendary motorcycle designer. MV Agusta, one motorcycle which you can see here, this one, is one of the most beautiful motorcycles in the world. He designed this, and he had a process where वो कंप्यूटर के सामने नहीं बैठते थे डिजाइन करने के लिए. मुझे भी पसंद नहीं है, मैं भी अपने असाइनमेंट्स कॉलेज में करा लेता था किसी से, लाइक मैं सामने बोल देता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता. But I believed in touching something, feeling something, and हाथ से काम करने में विश्वास रखते. Correct. Like it's similar to how on Bumble you can see dudes and women, but when you meet them, you get a real feel of it, right? देखो दोनों मुस्कुरा रहे हैं अभी. And trust me, I am not kidding. I'll take a screenshot. I just got a notification from Bumble. I'm not even kidding. I will send it to you. You can put it on 100%. episode. Yeah, we'll right? put it. 100%. Yeah. So
This is We'll basically tag saying Bumble feel also. I can feel the Delhi वाली vibe, पता है? हाँ, मतलब you'll feel a lot of vibes in me. Like देखो बीच में अगर if I'm angry about something, you'll see a little Maharashtra in me. If I'm like very मस्ती वाले mood में something, then you'll see a little Delhi in me, right? So you'll see Haryana, you'll see the Nice, Rajput nice, side, you'll see nice. the Maratha side, you'll see everything together in one, This right? is cool. So there's this dialogue that Sanjay Dutt had used once, in one of his movies, like born in some place, brought up in India. ये मैं बचपन से मार रहा हूँ dialogue basically. So मेरा वही logic है. So you'll see a lot of sides. So build word comes from there. Ride part comes from all the rides that I did. मैं college के time पे भी Friday को. So I got my Harley when I was 18. थोड़े पैसे मैंने थोड़े घर वालों से मिक्स करके हम लोगों ने किया. डील थी प्रॉपर. कॉलेज में से हर घर वाले करते हैं ना कि तुम इतने मार्क्स ले आओ तो ये मिल जाएगा. हाँ, मेरा कुछ वैसा. हाँ, एंड आई एम वेरी लेस डिमांडिंग इन लाइफ व्हेन इट कम्स टू ऑल ऑफ दैट, राइट? I don't buy a lot of clothes. You'll see me wearing almost the same clothes in all the my same stuff. jacket, the same clothes. Yeah, so मुझे कपड़ों का बिल्कुल शौक नहीं है. मुझे कभी लेबल समझ नहीं आए. मुझे कभी भी कोई भी मतलब ऐसे फैंसी ब्रांड्स मुझे समझ नहीं आए when it comes to clothing and everything. मुझे कुछ भी दे दो मैं पहन लेता हूँ. I'm not really choosy about that. Footwear, yes, I have issues because my feet size is 13, so मिलते नहीं है तो वहाँ थोड़ा choosy हूँ मैं. तो वहाँ मुझे choosy भी नहीं हुआ. जो मिलता है पहनना पड़ता है, right? Then I liked your shoes, man. Like जो last video में थे हार्ले के साथ जो वीडियो थी ना, jacket and shoes, I like them. Those are basically my signature boots since 2012. Every year I get one pair. Those are boots which NSG commandos wear. Yeah. They come from Delhi camp for me, and every year I get a pair from the same shop. And I just call them and they deliver it. They were really nice, man. They were really nice. Yeah, and so मैं Friday को जो college में since I had my bike, classes खत्म करता था और मैं पूना से कभी MP जा रहा हूँ, कभी नासिक जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, इंदौर चला गया घूमते घूमते और मंडे को वापस आ जाता था क्लासेस के लिए. So 2 दिन में मैं 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर चला के आ जाता था. And this was a time when I had no idea कि YouTube है, Instagram है, क्या है. So just do it for me. Right, my logic there was I'm having fun. मैं photos नहीं click करता था, कुछ नहीं करता था. Even today, if I'm not vlogging or this thing, I don't like stopping and clicking pictures because for me it spoils my ride. Right, मुझे पसंद नहीं है. Like मुझे पसंद है कि जब तक मैं बाइक में पेट्रोल है तब तक राइड करते रहूं. Like why should I stop? Exactly. But yes, now that I have a kind of responsibility to share my experience with people, I have the responsibility to endorse and represent a few brands that I truly believe in. So वो भी एक चीज है जो मेरे को करनी पड़ती है अभी. And that is actually one thing I will mainly talk about also in this in the talk, the talk. So that is there. So yeah, मतलब sketchable ride started like this. मतलब from my college time मेरे portfolio का tagline था actually. Like third year में जब portfolio submit करते हैं तो उसमें we had to describe ourselves in 3 words. So sketch, build and write because these are the 3 things I do. And उस टाइम पे मेरा Instagram handle का नाम था sketch nut. फिर मैंने उसको change करके जो है इसको मैंने sketchable ride किया था. And it stuck to me since then. जिनको भी ये चीज समझ आती है they follow, they relate. जिनको नहीं आती है उनके पास लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स हैं एंटरटेनमेंट के लिए. It's like you have your unique content basically. Yeah, like most of the people who follow me are engineers. They are like people who are studying technical stuff. They're interested in knowledge, right? My idea of doing what I do is not to give entertainment, it's to give infotainment, right? Like my whole logic is ki information. Any video of mine you watch, you will learn something always. I'll agree. Right? So that is the whole logic of me doing stuff that entertainment बहुत लोग करते हैं, right? Infotainment भी जो है मेरा मतलब मैं अपना domain मानता हूँ इसको. And I am like, वो बोलते हैं ना, be the best at what you are. So in this case, I always say this that तुम किसी को भी खड़ा कर दो मेरे सामने in terms of the people who are in front of the camera. And when it comes to technically knowing your motorcycles, I can go head on with anybody. आंसर दे दिया मैंने. तानिया से शॉर्ट में देना था बट नहीं it's perfectly I have fine. one more question. Like 18 साल की उम्र में अपने पास अपनी हार्ले, कॉलेज में तो काफी हाइप होगी. ये तो कॉलेज में हाइप थी. I have always been somebody like I'll tell you what. बचपन से ही I've always been doing stuff which is very different from a lot of other people. मुझे पढ़ाई का ज्यादा शौक नहीं था. Honestly speaking, like I was always into art, I was always into co-curricular activities, मैंने कोई स्पोर्ट नहीं छोड़ा. अगर मैं मणिपुर में हूँ तो वहाँ पे फुटबॉल का क्रेज है, मैं फुटबॉल खेलता था, मैं वहाँ टीम में वाइस कैप्टन था. मैं उसके बाद जब हिमाचल था तो मैं सीनियर्स के साथ बास्केटबॉल खेलता था. मैं तबला बजाता था, ढोलक बजाता था, ढोल बजाता था.
रेडियो पे परफॉर्म भी किया मैंने अपने, वहाँ पे एक टीचर थे हमारे धनीराज सर, उनके साथ। सो यू नो आई प्ले ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो, एक वो मतलब साइड थी हाइप मेरी वहाँ पहले पे। से ही थी, बचपन से हाँ हाइप थी। करेक्ट, और मुझे वो पसंद है, मुझे वो मेरा नशा है वो एक तरीके से। आई आई गॉट इट। ऑलवेज बीन समबडी हु, ये जो लाइट पड़ रही है मेरे ऊपर अभी, मुझे कभी भी इससे शर्म नहीं आई है सिंस माई चाइल्डहुड। एक दो टाइप के बच्चे होते हैं मेरे हिसाब से, एक आप जिसको बोलो पोएम सुनाओ और वो दीवार की तरफ मुंह कर लेते हैं, और एक जो ये बेशरम। सोचते हैं कि हाँ मैं उन लोगों में मैं सोचता था कि सुनाओ तो कौन से सुनाऊं, इम्प्रेस किससे सबसे ज्यादा होंगे, You're kind of राइट। megalomaniac person, no? हाँ, like I've never had stage fear, I've never had fear of Yeah. people. You like when people मतलब like you. या लाइक मुझे पसंद आता था कोई, मैं जाके उनके साथ चिल भी करता था, नहीं पसंद आता तो मैं पत्थर भी फेंक के मार देता था, मैं उन बच्चों में से था, लाइक लेजेंड। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। हाँ, लाइक आई हैव बीन लाइक दिस सिंस माय चाइल्डहुड, लाइक बिफोर से सलमान खान और संजय दत्त मेड दिस फेमस, मैं बचपन से ऐसा हूँ। This is nice. This is nice. And about your struggles, man, like ये सबसे important है. Because the thing is, आपके इस पूरी जर्नी में ना लोग struggles, मतलब क्योंकि somehow If you आप listen it to your words, it looks very smooth sorted. sailing kind of हाँ. a thing. But I'm And pretty sure अगर struggles आपका like it. In terms of channel भी देखेगा struggle, ना कोई, तो they will see हाँ। Harley, your boots, your jacket, तो उनको लगेगा कि यार पहले से ही पैसा है और कभी कोई स्ट्रगल रहा ही नहीं है. रही जैकेट की अगर मैं बात करूँ तो I like the 13.5 किलो की jacket. जैकेट है, 13.5 किलो की जैकेट पहनना ही स्ट्रगल है, ठीक है। तो ट्रस्ट मी विद दिस, आई हैड गिवन अ सेमिनार इन अ कंपनी कॉल्ड हिंज इन पुणे। मैं वहाँ पे बच्चों को कलर थ्योरी पढ़ा रहा था, एंड यू नो आई वाज टेलिंग पीपल हाउ इन ग्राफिक डिजाइन कलर मैटर, एंड यू नो बिकॉज ऑफ माय डिजाइन बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग, मैं लेक्चर के लिए गया था, एंड मेरी जैकेट देख के सब ऐसे फैसिनेट हो रहे थे, तो मैंने कहा पकड़ लो, एंड आई किड यू नॉट, लाइक दे वर गर्ल्स एंड दे वर किड्स बेसिकली, लाइक वो लोग जैकेट पकड़े जुप करके नीचे सीधा, इट्स दैट हैवी, सो वेयरिंग But द it is जैकेट really nice. इटसेल्फ इज यार, अ I was स्ट्रगल। really into it. Like मैंने देखी ना, Yeah, I मेरे को mean लगा कि it's a proper तुम पहन भी नहीं American पाओगे। cowhide leather, man, and come on यार. जितना पसीना मुझे भी लाइट से आ रहा है, इससे डबल 4 गुना पसीना लाइक उससे आता है। टॉकिंग अबाउट स्ट्रगल्स, लाइक स्ट्रगल्स की अगर मैं बात करूं तो सी, एक चीज होती है वेयर यू हैव स्ट्रगल्स इन टर्म्स ऑफ मनी, यू हैव स्ट्रगल्स इन टर्म्स ऑफ यू नो मॉनेटरी चीजें ले लो, या फिजिकल Mentally, चीजें जो yeah. होती है, राइट। एक स्ट्रगल होती है जो इसको आप फिर भी ओवरकम कर सकते हो, आपके पास पैसे आ गए, यू कैन ओवरकम दिस, राइट। Anytime. पैसा इज वन थिंग जो आता है जाता है सब कुछ। मैं अभी स्टॉक ट्रेडिंग करता हूँ, देयर आर डेज आई हैव मेड गुड मनी, देयर आर मेड डेज आई हैव लाइक लॉस्ट मनी लाइक क्रेजी, एंड दिस पार्ट ऑफ द जर्नी, राइट। बट एक चीज जो मैं हमेशा से जिसको मैंने स्ट्रगल किया है इज मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड मी, right? Since my childhood, it has been an issue where I was always tried to be molded into something, and मैं मोल्ड फाड़ के बाहर आता था, right? मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया है अपने बैचलर्स के बाद, मैंने 2 ट्रेनर्स को निकलवाया कॉलेज से, आज की डेट में मेरा कॉलेज भी बंद हो चुका है। मेरे बैच वाले आधे लोगों के पास जॉब्स है, आधे के पास नहीं है, बहुत मतलब बहुत ही अजीब सा सीन है। एंड I have always been like you know the मंगल पांडे of my this thing. मेरे कॉलेज में मेरे ट्रेनर्स भी मुझे बोलते थे कि सल्लू भाई आ रहा है वहाँ से, बिकॉज लेजिट वो इमेजिन करते थे मैं चल के आ रहा हूँ पीछे से ब्लास्ट हो रहे हो जैसे। तो yeah, I was talking to one of my trainers recently, Vinita Chopra. She's a psychologist also, and she's been you know organizational behavior एक subject होता है OB, तो she's an expert in that and a lot of different things basically. And she also told me कि हम ऐसी इमेज देखते थे when we used to come. तो मुझे लोगों को अपने आप को समझाने में बचपन से स्ट्रगल रहा है। इफ somebody tells me कि तेरा फेवरेट कलर ब्लैक नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज शनि भगवान का तुम्हारे ऊपर कुछ प्रकोप है। I'm like, so technically his favorite color is black. I'm wearing his favorite color, so why will I have an issue with it? He should technically love me because I'm wearing his favorite color. ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आता। And also you being a very you know I'll not say childish, but you being a very you know hyped up person, अगर आपकी सीरियस साइड देखे ना कोई, तो वो भी लोगों को समझने में बहुत टफ होता है। मेरी दोनों साइडें बहुत एक्सट्रीम है, लाइक I got somebody who's I got it. in I hate gray zones in life. If I like somebody, I like somebody. I hate somebody, I hate somebody. मुझे कोई चीज खाने में पसंद हो या किसी भी चीज में पसंद है, या तो पसंद है या नहीं है। I will never say anything कि so है, you know, हाँ वो चलेगा वाला एटीट्यूड मेरे पास शुरू से नहीं है, बचपन से। Be it food, be it a people, be it an activity, be it a car, motorcycle, anything for that matter, right? I have been very upfront and open बचपन से, जिसको बोलते हैं ना बेहुदा बेशरम आदमी, एकदम सामने खुली किताब टाइप। I have been like that. To me it never mattered what the सामने वाला person thinks about me, right? कि मैं ये बोलूंगा तो उसको कैसा लगेगा, क्या लगेगा। Yes,
I have had few logics in my life, या उसूल जिनको बोलते हैं कि मैं इनको नहीं तोड़ूंगा, is like like not lying. I hate lying. I genuinely don't do it. मुझसे कोई भी सवाल पूछोगे मैं सीधा सीधा बता दूंगा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, because it is me. It is part of me, right? अगर आज की बात नहीं है, even if few years down the line I am even like a multi-billion-dollar startup का कोई मेरा मालिक भी बन जाओ ना, मैं तो भी ऐसे ही रहने वाला हूँ, because it is me. Why should I hide? और why should I कैद क्यों करूं मैं अपने एक एक्सपीरियंस को rather than sharing it with people? क्योंकि if they can also learn something from it, why not? Part of the reason why I started Sketchbuild Ride was also this, because I remember I was riding, मैं पिक्चर्स नहीं क्लिक करता था, कुछ नहीं करता था, और मैंने इतनी बारिश में राइड किया था उस दिन दैट मेरे हेलमेट का वाइजर खोला, वो वाइजर टूट गया था, मेरे हाथ काले हो गए थे अंदर से पूरा, द स्किन हैड लाइक ऑल swollen and everything. एंड कॉलोनी में घुसा, मैं अपने दोस्त के घर पे रुक रहा था इन बॉम्बे मीरा रोड पे, एंड मैं गुजरात से राइड करते हुए आया था उस दिन. हैवी रेन, लाइक वेरी हैवी रेन, बाइक में नीचे से पानी घुस रहा था, तो इंजन भी थोड़ा सा मिसफायर कर रहा था, काफी सीन्स थे. दिस किड स्टॉप्ड मी एंड व्हेन ही आस्क्ड मी आप ऐसे क्यों हो रखे हो, आपके हाथ को क्या हो गया. आई हैड नथिंग टू एक्सप्लेन कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है. एंड he had his imagination working, and मुझे फिर अपना याद आ गया कि I used to have this weird imagination, तारे जमीन पर के बच्चे की तरह एकदम, I had my own world. I was creating stuff. I was very creative since I was a kid. Drawing ले लो, art ले लो, singing ले लो, कोई भी activity ले लो, I have done everything. You name a competition and मैं certificate निकाल के दिखा सकता हूँ. For that matter मैंने रंगोली competition भी जीता हुआ. ये चाहिए मेरे को, उस चीज का सर्टिफिकेट मेरे को चाहिए. मैं दिखा दूंगा, मेरे पास रंगोली का भी कंपटीशन का है, मेरे पास डिबेट्स है, डेक्लेमेशंस है, जो नाम है मेरे पास सब पड़ा है. रंगोली अच्छा लगा मुझे. हाँ, तो मतलब मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैं वही कह रहा हूँ ना, लाइक आई सॉ अ कंपटीशन, मैं कूद पड़ता था उसमें, राइट. लड़ाई झगड़ा और कंपटीशन, दो चीजें मैं हमेशा कूदता था उनके बीच में. मैं उन लोगों में से नहीं कि झगड़ा हो रहा है भाग जाओ, मैं बोलूंगा अरे मैं किसको मारूंगा इनमें से, राइट. तो सिंपल लॉजिक बीइंग कि स्ट्रगल्स मेरे इसी चीज में रहे कि क्या करना है, क्यों करना है. सामने वाला बोलता था, मेरे को समझ नहीं आता था, बिकॉज मैं करूंगा तो मैं डिसाइड करूंगा ना, ऑफ कोर्स, लाइक आई विल डिसाइड व्हाट आई विल डू. व्हेन इट केम टू माय डिजाइन कोर्स आल्सो, लाइक बीइंग फ्रॉम अ फौजी फैमिली, लाइक माय डैड वाज इन द इंडियन आर्मी, माय ग्रैंडफादर वाज इन द इंडियन एयर फोर्स, एंड लाइक मेरे टाइम पे मतलब and pressure होगा लेकिन for you to enter the army. प्रेशर नहीं था. I won't say it was pressure. This is one thing where I feel I'm lucky that my parents have never been like pressurizing me about all of this. अब कर रहे हैं शादी वादी के लिए, and I am like कि फिलहाल बख्श दो मुझे थोड़ी टाइम. but उसके अलावा जो है there has been no pressure on me for anything in life. Only pressure has been like say for example 10th के बाद साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, क्या लेना है. मैं आर्ट्स लेना चाहता था, बट मुझे साइंस ले ले, बाद में ऑप्शंस होंगे. एंड ऑनेस्टली आई वाज लाइक मैं करने को मैं सब कर जाऊंगा. आई एम वन ऑफ दोस किड्स, लाइक मैं मैथ्स में 86 का पढ़ के गया था, 86 लेके आया. मेरे को ट्रिग्नोमेट्री पसंद नहीं थी, 14 मार्क्स में पढ़ के ही नहीं गया. आई एम लाइक आई नॉट डू इट ओनली, आई एम लाइक जाए, मैंने छोड़ दिया, सारा छोड़ दिया. 86 अटेम्प्ट किया, 86 लेके आया. आई एम लाइक जिस चीज का मुझे पता है कि मैं आगे कहाँ यूज कर रहा हूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्री में देख रहा हूँ यहाँ पे साइन कॉस कहाँ पे क्या है, नहीं है. तो ये चीज अभी नहीं है, ये स्टबर्ननेस जो है मेरे अंदर, जिसको बहुत बोल सकते हैं कुछ भी, बचपन से.